completed in last lecture. Now, so first we have completed this term symbol and how this different term is splitted. So that we will going to see today, and which type of transitions are allowed. So that is we have also seen. Then also one more very important topic is magnetic moment. That is types of behavior, or you can say orbital contribution and spin orbital coupling. So this is we have also seen. So now this is about content which is covered in last lecture. In second lecture, this is the way to calculate number of microstate. Energy comparison of different orbital. Which orbital having higher energy, which one having lower energy, to calculate magnetic moment. New spin only value. So these things we have completed. Now today we are going to discuss how different term is splitted, and then we go for Orbital and that type of diagram. So one of the very important one is splitting of different term. That is called electronic spectra. So see, S orbital is a singly degenerate. It is a spherical in shape. An S orbital having only one in number, so it cannot be splitted into any orbital. Even see, P orbital is 3 in number. It is a triply degenerate, but P orbital can also see, it cannot be splitted because P orbital also having one set, and that is comes to the T1G. So P orbital also cannot be splitted. But we know very well, see, d orbital is of course splitted into two parts. Which are two parts? D orbital T2G and EG. Yes, it is splitted into two sets. Yes, T2G set and EG set. Good. So if you go for splitting, in that case, what happens? You can have here if you having s orbital, splitting of, you can say, orbital. Okay. Now the splitting of orbital. Splitting of orbital. So if we see s orbital is concerned, then there is no splitting. S orbital does not split it into any orbital. S orbital is there, so no splitting. What's about p orbital? P No orbital splitting. also no splitting, but in the case of d orbital, Will be you split having, into two parts. yes, so d orbital is definitely split into two parts. That is called, you can have a, it is split into EG set and T2G.
F orbital is concerned, then F orbital is splitted, it is also undergoes splitting. It is also splitted into 7 orbitals, different 7 orbitals, A1G, T1G and T2G. Okay, T1G and T2G, that is 3 plus 3 plus 1, that is 7 orbital. So in this way, if G orbital is there, so it is also splitted. G orbital is splitted into 9 different orbitals. That is, it is A2G, T-EG, T1G and T2G. So say splitting of orbital is take place in a different. So now we go for one by one how d orbital gets splitted. So d orbital is splitted into, you know very well, in octahedral field. We have also seen it. It is splitted into 2 parts. D term is concerned, or d orbital is there. So it is splitted into 2 different parts. That is, one set is, you can say, EG, and second set is T2G. So this is splitted to EG set and T2G set with lower energy from the very center. So this difference is 10 dq, or 1 octahedral splitting, and this energy of this orbital increases by 6 dq, and this is decreases by, you can say, 4 dq from the pericenter. So this is the case for d orbital. This is the case in octahedral field. In the tetrahedral field, it is opposite. That is called EG set, and here it is T2 set, and here it is E set. Okay, so this is in a tetrahedral field. Same phenomenon is there. Here it is by plus 4 dq energy increases, and here it is by minus 6 dq its energy decreases. This is for D term. So in short, see, D term is splitted into, you can have a EG and T2G. Now what's about F term? F orbital. F orbital is 7 in number. It's split into 3 terms. Yes, this is the F orbital. It's 7 in number. 7 orbitals are there, so they are splitted to 3 different terms. That is, lowest energy term is, you can say, here it is. This is called P1G. It may be ground term. Okay. Then next is, here it is. Next term is comes here. It is called T2G. Again, 3 orbital is here, and this upper one is what is called this one? A. It is A2G. It's A2G. So see, F orbital gets splitted to that is, you can say, T1G, T2G, and A2G. I think here we have written A1G. This is A2G. And it is A1G. This is A1G. So this is a small correction here. So now see, this is the way in which it is splitted. So now you tell me here how energy of this T1G is decreases and the other orbitals are increases, and by what dq. So here it is, see, this its energy is suppose decreases by 6 dq. minus 6 40. dq. 6 dq. So what is total energy? This is a barycenter.
This is a barycenter. What is total energy? 3 orbital is there, so 6 into 3. Total amount is? Minus 18. Yes, it's a minus 18 because 3 orbitals are there. Now energy of T2G orbital is increases by 2 dq. Energy of T2G orbital is increased. So 3 orbital is again there. Okay, so it's a total become 3 into 2, that is 6 dq. And energy of this orbital, see, energy difference between these two is 10 dq. So if you know very well, see, these are the energy difference. Energy difference, this is in octahedral field, in a weak octahedral field. So this is the way which this orbital gets splitted. F orbital is splitted into various part, that is called 2 dq. Okay, it is not a 10 dq, but it is 12 dq. Sorry, because definition of barycenter is equal amount distribution is there on both the side. So you can have a here. See, you can just check the energy. Here 12, one orbital is there, so 12 into 1, that is 12, and 2 into 3, that is 6. So 12 plus 6, what is total amount of energy on upper side? 18, and in below it is also 18. So that is called equal amount of energy distribution. The case of, you can say, from the barycenter. Now if you go for tetrahedral geometry, same things for F orbital, you can do the splitting of tetrahedral geometry. Then opposite thing is taking place. What happens in the tetrahedral geometry? In A2G in lower. yes, in weak field tetrahedral geometry, here you can have a diagram. Is this? These are the 7 orbitals. These are the 7 F orbitals. So it gets splitted into here. Lowest energy ground term is, that is called lowest energy term is A2. There is no Girard-Oron Girard term. And next here it is T2. T2, and here it is T1. it's a T1. And this is a barycenter. So what is energy over here? It is increases by how many dq? This 6. is increases by 6 dq. So 6 into 3, that is 18. And energy of A2 is decreases by minus 12 dq. And T2 is decreases by 10. minus 2 dq. ना टोटल कितना चाहिए? 18. तो आपको टोटल से 18 चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू? Here you require total 18. So this is by 2 dq. So 2 into 3, that is minus 6, and 12 minus 12, so it's a total minus 18. So this is the case of tetrahedral complex. Now see, A orbital is a singly degenerate. Which symbol we are using? Symbol that we are using is, yes, A orbital, A term is a singly degenerate, or you can say use small a or singly degenerate. What's about T term? Capital T, or Capital you can T1. small t for which orbital? For triplet degenerate. Okay.
triplet degenerate orbital, you can use this term. What's about E term? E or small e is used for? E, capital E. It is for doubly degenerate. Okay, it represents two orbitals. So this term we are using. So conclusion is the S term, and so that is splitted into different levels. That is called S term is splitted into, you can say there is no splitting. So S term is written as A1G. P term is written as, how to write down P term? It is by A1G. T1G, and D term is AG plus 2G, T2G, and you can have a D term. Then F term is T1G, T2G, and A2G, and G term is nothing but, you can say A1G, EG, T1G, and T2G. That is also written as a capital S. You can also write down capital S, capital P, capital D, F, and G. So you'll get, this is the result. So now that is very useful to construct diagram. So now first we go for splitting of D term. सर वन और का मतलब क्या है? मतलब T1 T2 A1 A2. A1 is a symmetrical transformation of S orbital. S orbital कितने नंबर में होती है? 1 होती है. तो उसका जो सिंबल है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक टर्म है वो A1 है, Mulliken term है एक्चुअली. इट इज अ Mulliken term. व्हाट्स अबाउट P orbitals? P orbitals कितने नंबर में होती है? 3. P orbitals is 3 in number. तो उस केस में क्या होगा? उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? T. डी टर्म और टी टर्म यूज करेंगे, T1G. ओके, ऐसी तरह तीन टी कमिंग ट्रिपली डिजेनरेट है. सर वो समझ रहा हूँ सर, बट 1 और 2 का भी यूज कर रहे हैं, ये नहीं है. नहीं, ये दे दिया ना मैंने. डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना. जैसे फर्स्ट एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए A1G यूज किया है. ओके, इससे सिंपली फॉर टर्म इज A1G इज ग्रांटेड टू एस. उसके बाद T1G P ऑर्बिटल को ग्रांट कर दिया है टर्म. अभी दोबारा इसको यहाँ पे सी इससे ट्रिपली डिजेनरेट. तो डी ऑर्बिटल है, उसमें आपके पास तीन सेट है. एक dx² - y² एंड dxy dyz एंड dxz. तो dxy dyz एंड dxz के लिए T2G यूज करेगी यहाँ पे. ओके, इसी तरह जैसे आप उसमें जाओगे एफ ऑर्बिटल में, तो एफ ऑर्बिटल में सारी एफ ऑर्बिटल डिफरेंस होगी. तो यहाँ जो T1G है वो ये नहीं है, जो px py pz है वो नहीं है. ये एफ ऑर्बिटल के लिए एफ की जो डिफरेंट ऑर्बिटल है उसमें से हम असाइन करते हैं सिंबल. ओके, बट ज्यादातर क्या करते हैं, पी एंड एस ऑर्बिटल को A1G सिंबल असाइन कर दिया. तो वही सेम सिंबल यहाँ पे भी है सी A1G G ऑर्बिटल में. तो इसका मीनिंग ये नहीं कि दोनों सिंबल सेम है. एस ऑर्बिटल के लिए होगा तो वो एस कंसीडर की जाएगी, बट एक ऑर्बिटल के लिए A1G यूज करते हैं. आप A2G भी एक ऑर्बिटल के लिए यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज, और ये कोई लिटरेचर मेथड नहीं है कि इस हिसाब से ऐसे लिखे गए. इट इज ए Mulliken terms. so that is you have to remember. and ये बेसिकली जो सिमेट्री है उसमें से डिराइव करके लिखते हैं. जैसे T1G रिप्रेजेंटेशन, तो उसके सामने एफ ऑर्बिटल के कंपोनेंट दिए होंगे. ओके, सो इट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम ओके सर. सिमेट्रिक क्राइटेरिया. बट आपको तो ये याद रखना है. इसमें मैं ऐसा पूछूं कि एफ ऑर्बिटल कितने में स्प्लिटिंग होगी, तो A2G T1G T2G सेट करेक्ट आपको पता होना चाहिए. These are the orbital, but T का मीनिंग है ट्रिपली, E का मीनिंग है डबली, एंड A है सिंगली. उसमें आपको बाइफर्केशन ऐसे करना. बट सी वैसे ज्यादातर जो क्लोज टर्म होती है ना, जो नजदीक वाली, वो ज्यादातर रिपीट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल सी यहाँ पे आपने एक बार A1G यूज कर दिया है, तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो T1G है. तो उसके बाद आपको अगेन टी टर्म की जरूरत है. तो P ऑलरेडी T1G असाइन कर दिया है, तो P में T1G हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जब तक पॉसिबल है तब तक. तो T2G यहाँ पे टर्म लिया देखो. उसके बाद आप जब नेक्स्ट में जाओगे तो ऑलरेडी A1G वन टाइम यूज हो गया है ऊपर, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे. कौन सी टर्म यूज की?
ओके सर, समझ रहा हूँ। इसी तरह, बट उसके बाद लास्ट केस में जाओगे तो उसमें भी अगेन सी यहाँ ए टू जी ऑलरेडी रिसेंटली वी हैव यूज, सो वी गो फॉर टी वन जी टर्म। इसी तरह तो जो नजदीक नजदीक टर्म है तो उनको आप बाई फॉरगेट भी ऐसे कर सकते हो। सो नाउ very important things is how d orbital is splitted. Now we go for splitting of d orbital. So splitting of d orbital, splitting of d 2s plus 1 multiplicity term for d1 and d6। चलो इनके लिए स्प्लिटिंग देखना है d1 and d6 के लिए। So what is electronic configuration when metal ion is subjected to weak octahedral and tetrahedral field? Has been. Yes, electronic configuration in weak octahedral and tetrahedral field. So if you go for its electronic configuration for D1 and D2 or D1 and D6, so in the case of octahedral field, what happens? For octahedral weak field, this is a D term. It may be whatever. It may be D1 or D6, कोई भी है इसके लिए. So here, this is splitted to T2G. Ground term is T2G. Then next is next term कौन सी आएगी after T2G? Then d orbital का splitting कर रहे हैं EG. Eg. Okay, this is a simple splitting. You can use capital term better for. So what happens? See, here you can have a say this is a very centers. This is we already know. So this difference is your 10 dq, or you can say it's a 1 octahedral splitting. So this difference is you can say 0.6 octahedral, or it is 6 dq. What's about this one? It's a 0.4 octahedral, or you can say it's a minus 4 dq. So see, this is the splitting. Here it is multiplicity remains same, 2s plus 1. Here also it's 2s plus 1. So this is called splitting of d term in the case of octahedral field. What happens in the case of tetrahedral field? In the Opposite. case of opposite thing is there in tetrahedral weak field complex. This is the opposite, d2s plus 1, that is splitted to here it's a E term and it's a T2 term. So you can have a, this is by minus 6 dq, this is by 4 dq, and total difference becomes 10 dq. So this is the case of now splitting of d orbital. Now in the case of different configurations, what happens? In the case of D1 and D6 configurations, how electronic configuration is written?
In the case of D1 and D6 will be same. same, yes. It says, see, this is a weak field complex is there. So this is a D1, you can say, and this is you can say D6. What is L value and S value? Here S L value is, दोनों केस में L value कौन सी है? +2. +2, yes. L value is 2. Here also 2. So which term is there? D. D term. If L value is 2, so it's a D term. वो दोनों केस में सेम रहेगी. अभी डिफरेंस क्या है दोनों केस में D1 एंड D6 में? So it's only multiplicity. यहाँ स्पिन कितनी है? 1/2. So multiplicity कितनी आएगी? 2. It's a doublet D term. यहाँ पे multiplicity D6 में कितनी आएगी? 2 आएगा. नहीं 2. ओके, उसमें भी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है. सो स्पिन वैल्यू 2 आएगी. मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2s+1 वैल्यू 5. 5 आएगी यहाँ पे. जैसे इट्स अ 5D टर्म. सो इसलिए यहाँ से सिर्फ मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है, इसलिए मैंने मल्टीप्लिसिटी एज इट इज रखा है यहाँ पे. बाकी सब डायग्राम सेम है. जस्ट यू गो फॉर व्हाट यू कैन डू. You can go for just making or this multiplicity is changed, but splitting pattern remains same for D1 and D6 configuration. Okay, यहाँ पे भी सेम रहेगा tetrahedral के लिए. Now what's about splitting pattern for D4 and D9? It will be same. It is also same, but only change in In multiplicity. Okay, so again we go for, and इसमें भी एक ही L value आएगी, that is 2. So इसमें भी D term रहेगी. So its pattern is 2s+1 D term. So it is splitted 2 in an octahedral weak field. What happens? This is splitted into T2G 2s+1, and this is EG 2s+1. Again same thing is there here. This by -4dq, it is increases by 6dq. Total difference is 10dq. So multiplicity, that is gets differ. Rest of the things remains same in the case of D4 and D9. What is multiplicity for, you can say, with D4 configuration? कितनी आएगी? 5. 5, yes. ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. L जो बाकी की L value is 2 and multiplicity is 5. So it's a D5 term. What's about in D9? 2. Multiplicity is 2, doublet term, yes. It's a D9. Only one unpaired electron. So 2s+1 value is 2. It's a D2 term. So that is the case for D4 and D9 configuration in a octahedral field. What happens in the tetrahedral field? In tetrahedral weak field complex, that is, you can say either D2 or D5 is splitted to, this set is called C set and this set is called T2. It may be 2 or 5. Multiplicity is 2 or 5.
Is it okay? Yes. So this is for D4 and D9 configuration. So this is for D9 configuration. So in short, see, in tetrahedral and octahedral, only ground term is differ. Rest of the other things are same. So for D term is concerned, you can have a, so how we will going to draw orbital diagram. Orbital diagram is just splitting. So orbital diagram for D term, that is for D1 and D6 and D4 and D9. You see, this is the orbital diagram. Look at here. This is a D term. So this is splitted to 2s plus 1 Eg and 2s plus 1 E2G. Or it may be T2 2s plus 1, or you can have Eg 2s plus 1. This is the energy. So now for D4 and D9, in an octahedral field, which one is ground state? D4 and D9 में से ग्राउंड स्टेट अपोजिट है. मोर देन आप फिल है ना स्प्लिटिंग में, या कौन सा लिखा हमने? D4 and D9 ground state is in a tetrahedral field. It is E. So this is C. This is for octahedral field. This is not for tetrahedral. ये दोनों में डिफरेंस ये है. In case of D1 and D6, and this is the case of D4 and D9. Here it's a octahedral field. And ये जो फर्स्ट वाला है, this is called tetrahedral. ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा. This is for tetrahedral field. So this, in this way, see, diagram of D4 and D9 is differ from that of, you can say, Eg तो ऊपर है, क्यों टेट्राहेड्रल होगा? रीजी नहीं लिखेगी यहाँ पे. इसे वो नॉर्मल जो स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वो अलग है. ये ऑर्बिटल में जब स्प्लिटिंग होगा तो इसका जो स्प्लिटिंग है वो सारी डी ऑर्बिटल ही है. D4 एंड D9 के लिए स्प्लिटिंग और D1 एंड D6 के लिए वो अलग अलग है स्प्लिटिंग. D1 एंड D6 के लिए कौन सा स्प्लिटिंग होगा? जो नॉर्मल होगा वो, दैट इज कॉल्ड, आपने जैसे यहाँ पे जो हमने नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग लिखा था वही स्प्लिटिंग इसमें आएगा D1 एंड D6 में. इसमें मल्टीप्लिसिटी तो डिफरेंट है ही, बट टर्म D है. D4 एंड D9 का डायग्राम जो है उसमें स्प्लिटिंग है पूरा, वो चेंज हो जाएगा. सी D4 एंड D9 अगेन द केस ऑफ सिमिलर वे, बट वन इज D1 एंड D6 केस जो है उसमें उसकी कंपैरिजन आप 4 और 9 के साथ करोगे तो 4 एंड 9 में जो एनर्जी ऑर्डर है वो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग में रिवर्स होता है. और उसके लिए भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, दे आर प्लेइंग द रोल. सर जब तो CFSE आपने पढ़ाया था सर, तो उसमें तो D4 D9 एक ही तरह से कैलकुलेट किया गया था. नहीं, मैं वो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. जब जैसे D4 और D9 की इसमें जाएंगे हम उसका ऑर्बिटल डायग्राम में,
तो वहाँ जिनका जो स्प्लिटिंग होगा वैसे ही है नॉर्मल। और अगर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, वो जो स्प्लिटिंग किया था उसमें तो D1 to D9 और D10 तक है ना, वही दो सेट लेंगे EG एंड T2G। यहाँ पे जैसे ही हम D3 में जाएंगे तो भी स्प्लिटिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने एक अलाउड ट्रांजिशंस बताया है। इसके अलावा और भी ट्रांजिशंस, पॉसिबल ट्रांजिशंस इसमें हो सकते हैं, बट वो फॉरबिडन है इसलिए नहीं लिखा हमने। ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको आप डिफरेंट वे पे लिख सकते हो, पॉसिबल वेज पे लिखना है। और उसके बाद जितने भी टर्म्स पॉसिबल है वो सारी टर्म्स इसमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ हमने सिर्फ डी टर्म इज काउंट की है, और डी टर्म इसलिए काउंट की है क्योंकि डी टर्म जो है वो इसमें अलाउड ट्रांजिशन है, इसलिए पॉसिबल ट्रांजिशन है। वैसे डी ट्रांजिशन तो फॉरबिडन है, बट स्पिन अलाउड है। ये ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में जो हमने वो लिगेंड फील्ड पे डिफरेंस था, ये जनरल वर्गल डायग्राम के लिए है। और उसमें यहाँ पे जो रिपल्सिव फैक्टर है एंड 10D की वैल्यू, उस हिसाब से ये स्प्लिटिंग यहाँ पे होगा। तो वो उसके साथ आप कंपेयर करोगे ना, तो वो पॉसिबल और डिफरेंट आएगा रिजल्ट। इसमें से सपोज हमने तो अभी 4 ही सिस्टम लिखा है, D1, D6, D4 एंड D9, बट D5 के लिए डायग्राम टोटली अलग है। उसमें काफी सारे ऑर्बिटल्स है, काफी सारे ट्रांजिशंस है। D3 और D8 का भी डायग्राम अलग है। तो इस केस में जैसे ओरेगल डायग्राम आप ड्रॉ करो। दूसरा बोले तो इसमें जो ग्राउंड टर्म है, आप सी इन शॉर्ट जी ग्राउंड टर्म इज दिस वन फॉर ओरेगल डायग्राम। ग्राउंड टर्म जो है वो ग्राउंड टर्म, जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो लोवेस्ट एनर्जी टर्म ग्राउंड टर्म, और D1 या तो D9, ये सब डायग्राम में से D1 या D6, ये सब में जो ग्राउंड टर्म है, दिस ग्राउंड टर्म इज E। D2 एंड D7 में ग्राउंड टर्म जो है वो T है, एंड D3 एंड D8 में ग्राउंड टर्म जो है वो A है। दिस आर द ग्राउंड टर्म। D4 एंड D9, इसमें भी ग्राउंड टर्म जो है वो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज D4 एंड D9। तो इसमें ग्राउंड टर्म जो है, जैसे T2 है तो यहाँ मैं जनरल लिखता हूँ T टर्म। ओके, सो दिस इज ग्राउंड टर्म। तो उस हिसाब से स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ देखो D3 और D8 के केस में ए टर्म है वो नीचे आएगी, इसमें F ऑर्बिटल भी आएगी। तो पॉसिबल 1 बाय 1 हम देखेंगे तब पता चलेगा, बट इसमें तो सिर्फ दो ही अरेंजमेंट है पॉसिबल। एक इसमें सिर्फ एक ही टर्म पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड डी टर्म, इसलिए सिर्फ डी टर्म का स्प्लिटिंग बताया है। अदरवाइज आपके पास ए टर्म भी, एफ टर्म भी आ सकती है, और पी टर्म भी पॉसिबल हो सकता है, डिफरेंट एल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो। बट D9 के केस में क्या है, इसमें आपके पास एल वैल्यू जो पॉसिबल है वो एक ही है। ऐसे एल वैल्यू जो है उनकी, वो आप कैलकुलेट करोगे तो एक ही टर्म पॉसिबल है, एंड दैट इज कॉल्ड डी टर्म। एल वैल्यू +2 आएगी। तो वो जो स्प्लिटिंग वाला डायग्राम है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। वो जो है वो क्रिस्टल फील्ड और लिगेंड के स्फेरिकल इफेक्ट से जो स्प्लिटिंग होता है वो सारा बताया है उस हिसाब से। और ये ओरिगल स्प्लिटिंग डायग्राम है। तो ओरिगल में यहाँ जिस ऑर्डर से हम उसको स्प्लिट करते हैं टर्म, वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से स्प्लिट हुआ है, तो उस हिसाब से हम उनको कंसिडर करके यूज करेंगे डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे उसमें। तो उस हिसाब से स्प्लिटिंग के हिसाब से हम बाद में अगेन 10D और बी पैरामीटर बी वो सब कैलकुलेट करेंगे। ओके, B means Raka parameters. B is the Raka repulsive factor, Raka parameter, and beta is also नेफ्रोजेटिक रेशियो। तो Raka parameters. वो भी काउंट कैलकुलेट करेंगे, बट वो सब बाद में, एक बार स्प्लिटिंग हो जाए उसके बाद। दूसरा ये है ऑक्टाहेड्रल एंड वर्गल डायग्राम, एंड दूसरा TS डायग्राम है, तनाबे सुगेनो डायग्राम। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो TS डायग्राम है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड वर्गल डायग्राम इज एप्लीकेबल टू High spin. हाई स्पिन High कॉम्प्लेक्स। spin.
इसलिए इसलिए हमने यहाँ पे वीक फिल कंसीडर किया है। अब इसे ये आप यहाँ कंबाइंडली आप ड्रॉ करोगे तो D1 एंड D6 आपको पता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है उस हिसाब से नॉर्मल स्प्लिटिंग होता है। तो ये जो स्प्लिटिंग मैंने यहाँ पे बताया है EG एंड T2, ये किसके लिए होगा? D1 Octahedral. सिस्टम 1 and and 6. D6 system, but it is octahedral. Okay, D1 and D6 octahedral. What's about D1 and D9? D1 and D9 कौन सी सिस्टम आएगी? टेट्राहेड्रल। इनका डायग्राम अपोजिट है तो वो टेट्राहेड्रल आएगी। जी भी रिमूव कर देता हूँ, चलो जी राइट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो किसके लिए यूज करेंगे? Octahedral. It is the tetrahedral, right? Octahedral. So it is for D1 and D9. D6, D1 and D6 tetrahedral, D4 and D9, D4 and D9 octahedral. Okay, here on this axis it's a Yes, sir. self splitting. Okay, fine. Now see, अभी आपने जो बताया वो पॉसिबल अरेंजमेंट मैंने बताया, उस हिसाब से आप सब D2 और D7 में जाओगे तो उस केस में क्या होगा? D2 एंड D7 में ग्राउंड टर्म T है, तो D2 एंड D7 के केस में D2 एंड D7 configuration, what happens? इसमें टर्म कौन सी आएगी पहले वो देखते हैं। कौन सी टर्म आएगी? L value is 2 plus 1, that is F. 3, so it's a F term आएगी। yes, good, one is F term. Okay, one is a F term in this case. So F term कैसे split करेगी? 3 into 3 terms. तो कॉम्प्लेक्स है वाई स्पिन है, इसी तरह से आप जाओगे D7 के केस में, तो दिस इज D7, तो इसमें भी टर्म तो F ही है, बट मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 3/2 है, तो यहाँ पे 1 है, 1F plus 1F, that is 1, so 1, 2s plus 1 value is 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो इट्स 4, बट यहाँ जो स्प्लिटिंग होगा सी F ऑर्बिटल है, तो F ऑर्बिटल इज स्प्लिटेड इनटू, यहाँ देखो F ऑर्बिटल आ गई, तो ये जो क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल वाला जो स्प्लिटिंग डायग्राम नहीं है, याद रखना, सी F ऑर्बिटल ऐसे स्प्लिट करेगी, इट इज अगेंस्ट, इट इज स्प्लिटेड इनटू हाउ मेनी डिफरेंट? A2. यस, इट इज स्प्लिटेड टू A2 T1 and ग्राउंड T2. टर्म T है, तो ग्राउंड टर्म T है इसके लिए, तो T1G फर्स्ट, Then T2G, then A2. 2s plus 1, yes, then T2G is over here, and then A2G. A2. Okay, so this is the possible transition. This is very center, so this is minus 6 dq. This is 2 dq, and 10, this is 10 degree. 12 dq. 12 dq. Of course, this distance is 10 dq. Okay, Yes. so this is for F term for which system? D2 and D7 weak octahedral. तो यहाँ ग्राउंड टर्म T आ जाएगी। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? Opposite. अपोजिट हो जाएगा, so see D2 and D7 tetrahedral weak fill, you can have a opposite splitting. Here it's a A2 term,
Then below it, it's a T2 term, and here it is T1 term. Okay. Now this is a barycenter. So this energy increases by 6 dq. This is by 2 minus 2 2 dq minus 12. and minus 12 dq. So it's in short opposite. This is for D2 and D7 tetrahedral weak field. How D3 and D8 get splitted? L will be F. L value सर फिर इसी का रिवर्स होगा D2 D7 यस, इनका रिवर्स होगा तो इसमें जो ग्राउंड टर्म होगी वो इसमें जो अपोजिट हो जाएगी. यस, डेफिनेटली इट्स रिवर्स. वेरी गुड. जैसे हमने D1 और D6 का रिवर्स किया था D4 और D9 में, इसी तरह यहाँ पे भी रिवर्स आएगा ऐसे. 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो इट्स अ +2 +1 0 -1 -2. ओके. और यहाँ पे D8 में इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. So again you can have a L value is, what is L value? 3. तो दोनों में F टर्म आएगी, बट मल्टीप्लिसिटी पे से 3, बट वो जो चीज बताई उन्होंने, जैसे ऐसे F टर्म तो आएगी दोनों में, बट स्प्लिटिंग है वो रिवर्स आ जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जैसे हमने D1 D6 का रिवर्स D2 D4 में किया था, इनको कोई वो CFT के साथ कोई रिलेशन नहीं किया. ओके. इट इज अ सेपरेट वे टू स्प्लिट द ऑर्बिटल. सो नाउ व्हाट हैपेंस, सी हाउ यू विल गेट द स्प्लिटिंग. और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा इंडिकेशंस दे दिए आपको कि D3 और D8 के लिए ग्राउंड टर्म ये है और D2 और D7 के लिए ग्राउंड टर्म T है. सो ऑटोमेटिकली दिस टू आर रिवर्स. इसी तरह देखो ये दोनों का ग्राउंड टर्म डिफरेंट है तो वो अपने आप वो रिवर्स हो जाएगी. ओके. So now what happens here, you can have a splitting of F term F2s plus 1. How it is splitted? कौन सी टर्म आएगी नीचे? ग्राउंड टर्म जो है वो A है, तो यहाँ पे it is A2 A2. Here it is A2. Okay. Yes, it will be reverse. It's A2G. and next वाला यहाँ जो टर्म है वो T2G पे रिवर्स हो गया, जैसे आगे हमने बताया था ऐसे T1G इसी तरह आएगा. So again this energy is increased by 6 dq from this point of barycenter. सर ये ऑक्टाहेड्रल होगा. ये octahedral है. It's a octahedral and this is by -2 dq. This is by -12 dq. So इनका सी octahedral D3 D8 का and D2 D7 का tetrahedral दोनों सिमिलर हो गए. Okay, this is called octahedral weak field. What happens in the case of tetrahedral field? Tetrahedral weak field. इनका डायग्राम कैसे आएगा? A2 ऊपर चला जाएगा फिर T1 नीचे. यस, ग्राउंड टर्म चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे A2, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो T2 और यहाँ जो है वो T1 and this is the barycenter. So what happens? This energy increases by, decreases by T1 है तो इनकी 6 dq and this is by 2 dq and this is by 12 dq. So how to draw a common diagram for F term?
F term is splitted to, the F term is splitted to, look at here, this is, you can say, A2. A2 term. Then you can write down here T2, and here you can write down T1. This is the one of the way. And second one is, here you can have a A2, then it's a T2, and it's a T1. So on both the side, what is diagram? This is a common diagram for, see this on right hand side diagram represent D2 and D7, which complex? Octahedral. D2 and D7 octahedral, good. And Yes, D8 and D3 And tetrahedral. D3 and D8 tetrahedral, good. Similar way here it's a D2 and D7 D8 tetrahedral, and and D7 and D3, G2 octahedral. yes, it's a octahedral. So this is a common diagram for F term, and this is the common diagram for D term. Okay, so that's why now it is clear it is not related with the crystal field splitting diagram for octahedral and tetrahedral type arrangement. yes, sir. वो अलग चीज हो रही है. Okay, see, this is we have constructed for high spin complex with high spin octahedral field complex. So that's why you can have a octahedral complex is concerned. So you will get the splitting of different term, and we will going to calculate 10 dq value from same. So the electronic configuration which terms gives singly degenerate ground state in Orbital diagram does not gives those term which will give see singly degenerate, they cannot give zone Taylor distortion. जो भी term है वो singly degenerate होगी, that cannot be responsible for zone Taylor distortion. Zone Taylor distortion के लिए doubly degenerate या तो triply degenerate होनी चाहिए orbital. Singly degenerate cannot give zone Taylor. So now for Oracle diagram is concerned, so it is applicable to high spin complex or weak field complex. And so now tomorrow we will going to take a different system and draw a detailed diagram. Also write down the yellow transitions from the diagram, and from the transitions we will trying to calculate its different value, that is you can say 10 dq value. And in some of the cases where exceptional is there, so that exceptional part we will also see how water ligand can play the role, what is intensity of transitions, what is disorder, how to getting 10 dq from Oracle diagram, how to getting B value, that is repulsion factor B. So that is all these calculations is possible from Oracle diagram. नेट एग्जाम में तो ऐसे ही सिंपली क्वेश्चन 4 मार्क्स में 2012 में पूछा था कि निकल का कॉम्प्लेक्स था D3 सिस्टम थी, विच वन इज अ ग्राउंड स्टेट. D3 के लिए ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स था तो A इज द ग्राउंड टर्म, दैट इज फुल A2G. तो इसी तरह पूछ सकते हैं. और TS डायग्राम है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायग्राम, क्योंकि TS डायग्राम है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन, दोनों के लिए से एप्लीकेबल होगा TS डायग्राम. सो एक दो एग्जांपल वो भी देखें, बट ज़्यादातर आपको ओरिजिनल डायग्राम है वो प्रिपेयर करना है. ओके, so I think probably tomorrow we will try to complete this part and probably this chapter by taking all possible topic whatever is left now. Thank you very much. Now you can Sir, have next any class. doubt. Today next class कब? Yes, your next class is today. It will be probably